Hi everyone, Ashish Kyal here, and it's a warm welcome to every one of you. Fantastic to see you all here. I'm just checking if I'm audible, visible to all of you. आप सब सुन पा रहे, देख पा रहे, and give me a big thumbs up if the chat is on. Everyone is able to see that. Fantastic, glad to see you, Shruti. आपको बहुत टाइम बाद देख रहा हूं मैं. शेखर, देवेंद्र, सनी, fantastic to have you, Shesha, Sandipan, Vinay. Always pleasure to have you all here. Fantastic, and I can see everyone and then people who are there on YouTube. Are you able to see, hear me out loud and clear? If yes, give me a big thumbs up so that I know you are able to see me and you are able to hear me out. Neelam, Dr. Katam, Prathan, fantastic. Always wonderful to have so many of you joining in. And I'm just going to share across link to all the people who are there on YouTube. आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो जूम प्लेटफॉर्म पे. इफ यू आर ऑन द जूम प्लेटफॉर्म यू विल गेट मच बेटर क्लैरिटी. इंटरेक्शन थोड़ा सा इजी होता है एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑल हियर. मैंने जूम की लिंक शेयर की आपके साथ चैट में. Lovely guys, so every one of you, before I move on, I just want to ask the tweets. Is it working for you? Are you liking the tweets? Are you liking the short videos and the levels that I am mentioning? कौन कौन है जो यहाँ ट्विटर पे फॉलो करता है? ट्विटर लिंक एक बार सभी के साथ शेयर करिए. वी आर आई एम जस्ट चेकिंग यहाँ पर कि हम ट्विटर पे जो मॉर्निंग में लेवल्स डालता हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे. आई एम जस्ट चेकिंग विद दैट. ओके, द ट्वीट्स आर अमेजिंग, इट इज थ्रिलिंग एंड मार्केट्स आर मूविंग वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू दी tweet that I share across. Glad to know that. Before I move on, एक बहुत ही क्विक पोल जो हम फ्राइडे एट 4 में लेते हैं. What is the poll? The poll is that what is the trend for Nifty in the coming week? आने वाले वीक में निफ्टी का ट्रेंड क्या है आपके हिसाब से? Is it buy? Is it up or is it down? So मैंने एक पोल लॉन्च किया है. Let me see if that poll is going through. यहाँ से are you able to see the poll? I think there is some problem with my poll. I'm just checking the poll is on and I'm just checking if it's launching or not. Okay, I'm again going to launch the poll very quickly. Okay, now the poll is launched. What is the Nifty trend in coming week? Up or down? जो majority of the लोग होते हैं ना हमारे वेबिनार में वो right होते हैं. That's what I have observed. So let's see what are you picking. I'm going to share across the screen and people who are there on YouTube, you can join me on the Zoom platform. यहाँ आपके साथ मैंने लिंक शेयर की है और ट्विटर में फॉलो कर रहे हो आप. सनी, फैंटास्टिक, ग्लैड टू नो दैट. लवली, हेडिंग टुवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई. लाइफ टाइम हाई आ चुका है निफ्टी का, ऑलरेडी पार हो चुका है. लाइफ टाइम हाई वाज 26,277, वो पार हो चुका है. 300 का लेवल टच कर चुका है निफ्टी. बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाइस, निफ्टी लाइफ टाइम हाइस, फिन निफ्टी लाइफ टाइम हाइस. मतलब दोस्तों, अगर आप कौन कौन थे यहां से 8 महीने पहले जब मैंने कहा था, या साल भर पहले भी जब मैंने कहा था मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स इज हियर, एंड अप्रैल में जब क्रैश आया था बहुत सारे जन छोड़ दिया था वो होप. और एंड आई मेंशन्ड अबाउट इन अप्रैल 2025 this is the start. How many of you witnessed that the mother of all bull markets, and you are witnessing this is just still a start is what I am saying. It has many more milestones to achieve. अभी तो खाली लाइफ टाइम हाई जस्ट छुआ है निफ्टी ने. यहां से दिल्ली अभी दूर है दोस्तों. एंड आई एम एंडिंग द पोल राइट नाउ एंड लवली, बहुत सारे जन है जो वहां पर थे. यहां पर अभी करना क्या है, सिंपल वे से मैं बताऊंगा. आई एम गोइंग टू डू दैट, बट बिफोर आई मूव ऑन, very quickly, whatever we are doing is purely learning, educational perspective. I'm not recommending you anything. There is no guarantee in the markets. Please ensure you maintain stop loss, understand the risk. We are SEBI registered research analyst and ensure you understand what you are doing. बहुत जरूरी होता है, गारंटी नहीं है. रिमेंबर दैट. ओके, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, रिस्क होता है मार्केट में ट्रेड करने में. सो यहाँ पर AKTG टाइम राइडर्स आर ऑलवेज एंजॉयिंग द मदर ऑफ बुल मार्केट. यस, मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने बोला था यार मार्केट गिरता है आप फिर बुलिश हो जाते हो. अभी मार्केट ही वैसा है, ट्रेंड ही वैसा है. तो मार्केट गिरता है तो बुलिश होना वाला मार्केट है कि नहीं है? तो एंड इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट? इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, विच इज दैट्स द राइट साइड ऑफ द मार्केट. व्हाई यू हैव टू कीप बॉदरिंग अबाउट इट? व्हाई इट गोज अप? You have to ride it. That's what it is. The market is all about. Lovely. So let's just move forward now. यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों बहुत ही क्विकली एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. व्हाट इज द न्यू वेव सजेस्टिंग? व्हाट इज गैन स्क्वायर ऑफ 9 सजेस्टिंग?
what is the forecast that we can see it from here? Before I move on, जो short videos बना रहा हूं मैं, is it useful during the week? छोटा वीडियो 5-6 मिनट का, just the levels and what is the trend for the coming week. अगर है तो कमेंट में डालिए, चैट पे डालिए, so that I know these short videos are also useful for you. Okay, lovely. So everyone, are you able to see my screen here? Every one of you. आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक, बहुत ही सिंपल सा एक मेथड, जिसके बेसिस पे आप मार्केट को फोरकास्ट, मतलब बहुत सिंपल वे से आपको देखना है मार्केट को और समझना है व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। एंड ओवरऑल आई एम गोइंग टू ओपन अप अ ब्लैंक चार्ट। ब्लैंक चार्ट से शुरुआत करेंगे हम आज के दिन में। ध्यान देना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप अ ब्लैंक चार्ट। आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑन बैंक निफ्टी, इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट, सिंपली वीकली चार्ट पे देख रहे हैं हम, ठीक है, वीकली चार्ट, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट, what is the trend weekly? बड़ा trend, mother of the bull markets when we are talking about, I am talking about बड़ा वाला ट्रेंड। आपका शॉर्ट वीडियो हमारे लिए लाठी है, फैंटास्टिक। यहां पर what is the trend? Can I say this is closing at the highest weekly level ever, bank nifty? I'm asking you, looking at this chart, simply look at this chart, a very systematic way in which this entire movement has happened. And ओके, लवली। सो मतलब बैंक निफ्टी सेट है, ओवरऑल ट्रेंड बाय में ही है, वीकली ट्रेंड बुलिश है। इफ आई गो बैक टू निफ्टी चार्ट, आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड? मैंने एक ट्वीट भी किया था। इफ यू आर लुकिंग एट दिस ओवरऑल निफ्टी का चार्ट एंड ओवरऑल पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? एवरी वन ऑफ यू, आर यू सीइंग सम काइंड ऑफ अ पैटर्न? कैन आई से दिस इज लाइक अ कप एंड हैंडल पैटर्न? Are you able to see the chart, every one of you? I'm showing you the chart. Are you able to see the chart? Are you able to see my screen? यहां पर बहुत ही क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न है एंड वी आर ब्रेकिंग आउट द पैटर्न। कैन यू सी दैट? I mentioned in my Twitter today that what is the forecast of this pattern? I'm asking you the question, how do I project this pattern? और ये लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है। मदर ऑफ बुल मार्केट्स का मतलब ये नहीं कि अगर एक हफ्ते का करेक्शन है आप बोलो व्हाट हैपेंड टू योर मदर ऑफ बुल मार्केट। पहली बात, इट्स नॉट माय मदर ऑफ बुल मार्केट, इट्स एवरीवन्स मदर ऑफ बुल मार्केट्स। एंड इफ निफ्टी करेक्ट्स बाय 1 वीक, it's a part of it. If it corrects by 1 month, it's a part of it. So do not forget that. So ये सभी का मार्केट है, खाली मेरा नहीं है यार। What happened to your market? What happened to your stock? It's not my stock. Okay, so how do I forecast? Let me ask you all. Are there mentees here? Director साहब, सारे mentees में share हुआ है कि नहीं? I'm just checking. Are there mentees here? Every one of you who are here with me? Okay, fantastic. So यहाँ पर how do I forecast the trend? This is not inverse head and shoulder kind of pattern. This is more like a cup and handle. Let me just draw it for you to make it more apparent. So यहाँ पर cup and handle कैसे देखेंगे हम? Let me draw the arc. So this is like a नहीं, ऐसे नहीं, यहां से ड्रॉ करेंगे हम। आई एम ड्रॉइंग एन आर्क, that's the cup that we see, and the handle, which is a narrow part on the right hand side, that's the handle. So this is a classic cup and handle pattern. Okay, next question. Are you ready, guys? I want you to participate here, every one of you. I want you to participate here, please. I'm asking you, what is the target? Do you know target कैसे derive होता है on a cup and handle pattern? Is that you measure the height of the shoulder, project it on the upside. ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट, measure the height of the cup, project it on the upside. Share the screen. मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? I'm just going to stop it again. I'm going to reshare my screen again. ये थोड़ा सा इशू Zoom पे चल ही रहा है मेरे ख्याल से। Everyone is able to see my screen now? स्क्रीन दिख रही है? Give me a thumbs up if you are able to see the screen now. Okay, fantastic. Now यहाँ पर I'm again repeating, how do I measure the height? The height is this, which I have to project up. The height of the cup is this, which I have to project up. A very simple technical analysis method, no rocket science.
प्योर प्राइस एक्शन, भाव भगवान છે, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर इसे मैं मेजर करके आगे फोरकास्ट करना है, सो व्हाट हाउ आई कैन डू इट इज आई कैन सिंपली कम हियर, आई कैन प्रोजेक्ट हियर। सो ये लेवल लिया, ये लेकिन ध्यान रखना, दिस इज अ वीकली चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट, नॉट शॉर्ट टर्म टारगेट्स। दिस आई एम फोरकास्टिंग अपसाइड। I get the levels of 26,900 कंजर्वेटिव टारगेट। सो मेरा टारगेट वन क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर मैं ये लेबल्स नहीं चाहिए मुझे, लेबल्स कैसे हाइड होगा भाई? बहुत सारी चीजें दिख रही है यहाँ पर मुझे इसका स्टाइल में, आई डोंट वांट इट टू सी द लेबल्स। सो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन फॉर यू ऑल। इफ आई हैव टू write down the level, this is 26,900, okay, so that you can also refer it later on। मेरा पेन कहाँ है to draw it across? This is the level we are looking at, 26,900, okay। And screen sharing on है, are you people able to see the screen? Someone is still not able to see the screen। And if I project it from here, from the lower level, from this point, I'm projecting from this level, the low which was formed, and till here, and projecting on the upside, okay। I'm going to now project it on the upside, voila। What is the target you are saying? I'm just asking you all, I'm going to write it down for you, and I'm just seeing कि ये लेबल कैसे निकलेगा। मुझे लेबल नहीं दिखाना है, स्टैट्स नहीं चाहिए मुझे, प्राइस रेंज नहीं चाहिए, परसेंटेज चेंज नहीं चाहिए, चेंज इन पॉइंट्स, पिप्स नहीं चाहिए, okay, there, done। So what I am doing is, I don't want these to clutter my readings। Now, when I am forecasting upside, I am going to write it down the levels that we are seeing here very simply। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लेवल है हमारा 26,900, एंड ये टेक्निकल एनालिसिस स्टडी बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं है, मतलब दिस इज द स्टडी दैट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट, एंड आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन। और ये लेवल हमारा आ रहा है 29,620। Wow, that is some level, right? That's the pattern target, 29,620। That's the pattern target that we are looking for Nifty। 26,900 और इंटरचेंज हो गया, 96 के जगह आ गया और 29,620 हो गया। Can you see that? That is the pattern target as per the ongoing pattern। By when will it achieve? I am not disclosing that right now, but time करना भी possible है। दिख रहा है ये चार्ट सभी को? टाइम लाइन है, time करना possible है। I have just answered the question, I am not disclosing that right now, and that's the target that we are looking at right now। And this is going to be fast, quick, very quick, but patience, you will have to be very patient, you have to see those moves when it doesn't work, you have to be careful। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट यहां पर निकल कर आ रहा है। सो basis of a cup and handle and this pattern, is it simple? The so Nifty upside target is 26,900 followed by 29,620 from medium term perspective। This is mother of all bull market, and it is just in the exponential phase, मतलब ये थर्ड वेव की शुरुआत है। एंड यहाँ पर, are you with me, every one of you? And there can be some news, there can be events which can result into retests, which can result into sharp moves, you have to be careful with that। That's Nifty on a clean chart, simple concept। I'm going to ask you, how many of you are aware about the three candlestick rule? आपको पता है ना? थ्री कैंडलस्टिक रूल, मंथली ट्रेंड बाय और सेल है, मंथली ट्रेंड फास्ट फास्ट फास्ट, मंथली ट्रेंड बाय और सेल है, एवरी वन ऑफ यू।
ओके, फैंटास्टिक। वीकली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड बाय और सेल है? वीकली ट्रेंड बाय में है कि सेल में है? डेली ट्रेंड, डेली ट्रेंड बाय में है कि नहीं है? आई एम आस्किंग, सिंपल रूल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय में है, तो पैसा बनाना आसान कौन से डायरेक्शन में होगा? In which direction it will be easier, or the risk is less, or the line of least resistance? You know, Jesse Livermore, a fantastic veteran, 1929 का जब डिप्रेशन आया था, यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि जेसी लिवरमोर को कि यार प्लीज यू डू नॉट शॉर्ट द मार्केट so that the economy can recover. He was that person. He said the simplest way in which you can trade the market is to look at the line of least resistance. What does it mean? Line of least resistance मतलब क्या होता है? It's like a battlefield. Okay, it's like a battlefield. The what you have to do is you have to send across a few soldiers just before, समझो बुल्स और बेयर्स का बैटल है, send across a few soldiers on the battlefield to check, to test the waters. कहते हैं ना यार, पता तो चले कितना दम है. If those few soldiers survive, send an entire army, the war will be yours. So that's the concept. कौन से डायरेक्शन में लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब कहां आसानी से जा रहा है मार्केट, दैट इज द डायरेक्शन दैट यू हैव टू bet on. Am I making sense? That's the direction that you have to look at, and it works. So the only mantra that you have to follow is when it is not working, just lose little. But when it is working, ensure you make a killing. That is very, very, very important. वही तो मैं सिखाता हूं मेंटरशिप पे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड ऑफ कोर्स. चलिए, तो ये देखा हमने वेव, सॉरी नॉट वेव, सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे. अब मैं चलता हूं यहां से आप लोगों को लेके गैन के बेसिस पे. ओके, एंड नीरज मलिक कह रहे आई शॉटेड टुडे, ऑल माय सोल्जर्स डाइड. फैंटास्टिक, आई होप यू हैव सेंट ओनली अ फ्यू सोल्जर्स, नॉट द एंटायर आर्मी. ओके, लवली. सो यहां पर अभी चलते हैं गैन के बेसिस पे, देखना है कौन कौन है गैन लेवल देखना चाहता है, कौन सा है नेक्स्ट लेवल. गैन लेवल्स देखना चाहते हैं क्या? चलिए गैन लेवल्स देखते हैं. नाउ दिस इज द गैन लेवल, which means we are right now already breaking above that level mark of 26,002. 26,002 is the level. Look at this magnet. Nifty was consolidating around this level. Nifty was consolidating around this level, and we are finally breaking out. The next level to look at on the gain is 26,651. That's our next पड़ाव. ठीक है, तो यहां से मतलब 450 पॉइंट तो बनना चाहिए. 26,900 अगर आ रहा है तो अनदर 700 पॉइंट्स तो यहां से है. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी नाउ. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. आई थिंक आई एम didn't switch the screen. Are you able to see the gain chart now? 26,651 is the gain level. And are you able to see the magnetic level here? So from here, we are expecting that market should continue to go up and touch 26,651. That's the level. The level 24,728 was a true magnet. And from here, what a move. Look at this rise. What a move. Look at this fall. Where did it end? On the gain. Look at this rise. Where did it end? On the gain. That's the beauty. This is a sacred science, which I call the gain square of 9. This is a sacred science. The gain square of 9 is what we call as a sacred science. Now from here on, I'm going to go on the chart. And the magnet was 24,728 was a true magnet. I'm going to go on the wave theory chart now. Okay, wave theory पे चलते हैं. I'm going to open up the daily time frame chart here. And I'm going to remove these. I'm just going to put out some indicator, which is like an AK mid. And in Ichimoku cloud is a very powerful method if you know how to use that. Now, when I'm looking at this chart, my overall trend is still positive. Okay. And we are only in wave G, which is going to go up. However, I'm going to go on 1 hour time frame chart now. On the 1 hour time frame chart, what we are seeing is this
there is a concept which is known as a two-stage faster confirmation in neo wave. ओके, टू स्टेज फास्टर कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपली मैं आपको बता रहा हूं. इन दिस फॉल, कैन आई से this was the last falling segment from here, this was the swing high and this was the swing low. Can I say this was retraced faster? Can I say that this fall was retraced back faster on the upside? Everyone agrees with me? Guys, I want you to participate, please. Everyone agrees with me? Now, if that is the faster, this will be the starting point of my wave pattern, which confirms the prior leg जो नीचे आ रहा था वो complete हो चुका है और next leg ऊपर का चालू हो चुका है. Within this next leg, which is ongoing on the upside, okay, this was the first corrective pattern. This is pure new wave, Elliott wave मैं नहीं बता रहा आपको. From this pattern, यहां से जो ऊपर मूव आया, this is wave A, which we can see here. Right now we are in wave B, and I think we should head towards 26,400 at minimum. That is wave C. This is a moving average derived out of cycle. This is my AK indicator, which helps me to be on the right side of the trend. This indicator turned buy here. It is still on the buy unless all the three lines turn down. So it's still on the buy. So we'll be looking at it. That's an AK indicator. It's a custom indicator. So we are expecting that wave B should be over. We should go up from here on, touching the level of 26,400. Now, until when? Always remember there is always going to be a risk. So ये level कभी तक valid है? Unless and until I see a move back below this zone. That's a very important zone. This zone should not breach. If this zone is breached, गड़बड़ है. Then I'll get cautious कि यार गड़बड़ है, इतना नीचे क्यों आ गया मार्केट, इतना सब बुलिशनेस होने के बाद वापस ये लेवल्स को क्यों ब्रेक कर रहा है. So that zone comes to around 26,050. So if it goes below 26,050, I am going to get cautious. If it breaks 26,000, time to be very cautious. So 26,050 becomes my very important support level. Simple है. कौन से बेसिस पे? Prior price action, channel support and retracement. ये retracement आप जाके चेक कर लो, 61.8% के पास होना चाहिए. मैंने मेजर नहीं किया, I am just guessing it and judgment से मैं कह रहा हूँ. So that's how it's going to be. So this is how it's looking like on a neo wave chart. ये neo wave का chart है. Okay, are you able to see that? So Nifty neo wave pattern is suggesting that we should be moving up. ठीक है, यहां से towards 26,400 levels as long as 26,050 is intact. Use dips to buy and keep riding. Okay, यहां पर ये है हमारा सिंपल सा चार्ट basis of hourly neo wave. Now there is just one problem. Everything doesn't just come without problems, right? What is the problem? The daily time frame chart. If I'm looking at daily time frame chart, what is the problem? Can anyone tell me what is the problem? On the daily time frame chart थोड़ा सा एक problematic scenario है. वो क्या है? कोई भी बता सकता है? Any mentee here? The cycle. Absolutely fantastic. Sanjay, Rahul, Gaurav, Rishi, fantastic. Kamini, Shubham, fantastic. Lovely, guys. You are super. The problem is the cycle. ये जो नीचे आप सेमी सर्कल देख रहे हैं ना, this semicircle represents the cycle. The first half of the cycle is the bullish phase. 75% तक कभी कभी चला जाता है. The last part of the cycle is the tricky part. Okay, the last part of the cycle is the tricky part. And we are entering into the last phase of that cycle, which is a tricky part. अगर मार्केट को रैली करना है तो बहुत क्विकली करना होगा. ठीक है, बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि उसके बाद वाले फेज में सेलिंग आ सकती है. So for example, if you see these past history, just because I am saying don't try and understand that, just see this data. This was the second phase of the cycle.
we got a selling. This was the second phase of the cycle. यहां पर सेलिंग नहीं है, साइडवेज हो गया इन दिस फेज. This was the phase of the cycle. We got the selling. This was the phase of the cycle. We got the selling. We are going to enter that phase again. So अगर रैली करना है यार 26, 400, 800, 900 जो भी टच करने जल्दी कर, क्योंकि once we go up then we might have to correct. Until when? Do you want to know this date? Do you want to know this date? This date is simple 12th of December. That's the date. 12th of December. So अगर 12th December के पहले रैली नहीं आई तो प्रॉब्लम है. सो विच मीन्स में यार बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है. मतलब मुझे टाइम पता है, मुझे मोमेंटम पता है, मुझे प्राइस एक्शन पता है. तो कैन आई से दैट नाउ व्हेन आई एम ट्रेडिंग आई कैन ट्रेड विथ वेरी गुड स्ट्रैटेजी ऑन ऑप्शंस. आर यू विथ मी? दिस साइकिल रिलेट्स विथ पूर्णिमा एंड अमावस्या. नो, दिस इज अ हर्स्ट टाइम साइकिल. पूर्णिमा अमावस्या वाली साइकिल अलग है, ये हर्स्ट टाइम साइकिल वाली साइकिल है. सो इट्स नॉट रिलेटिंग विथ the Purnima Amavasya right now. But the Purnima Amavasya lunar cycle to fantastic hai. Lovely hai. The cycle of lunar has been simply brilliant. If you are just following the lunar cycle, it has been simply brilliant. Okay. यहाँ पर. So are you with me? Are you understanding these things? So this is how you have to look at the market in a nutshell, in a crux. You know, आधा घंटा हो चुका है. In a crux, what I am saying is that overall tone is bullish. Momentum has to come in coming week. If it doesn't come in coming week, time to get cautious. एक ही हफ्ता बचा है मार्केट के पास में ट्रेंड निकालने का, क्योंकि उसके बाद हम 12 दिसंबर तक फिर डिलेट हो जाएंगे. तो बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू बी क्रूशियल विच हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू लुक एट इट, ये सारी चीजें देखेंगे. साथ ही में देर आर मेनी, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. कल फिर मिलेंगे सर जी, पूछ रहे संदीपन. क्या विचार है आपका, मिलना है क्या कल? I was asking all of you, are you available tomorrow? Do you want to be with me tomorrow in 11 a.m. master class 29th November सुबह 11 बजे, जहां हम एलियट वेव, लास्ट टाइम हमने एलियट वेव स्टॉक्स पे देखा था, निफ्टी पे नहीं देखा था. इस टाइम निफ्टी पे देखेंगे. आप है क्या अवेलेबल? आनंद, अनिश, अमर, लिंक शेयर करेंगे क्या डायरेक्टर साहब सभी के साथ में? चलिए कल एक क्लास करते हैं, हैबिचुअल हो चुका है. चलिए कल करते हैं सुबह की एक मास्टर क्लास जहां पर 11 बजे हम चेक करेंगे निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर एलियट वेव, नॉट नियो. दिस इज द नियो वेव काउंट विच आई एम शोइंग यू. विल लुक एट द एलियट वेव काउंट एंड वहां पर शेयर करेंगे. और बहुत ही क्विकली जो जो हमारे साथ में, मैं क्यूआर कोड शेयर करना ही भूल गया, व्हाट्सएप की लिंक भी शेयर नहीं हुई आज. तो यहां पर डायरेक्टर साहब आपने याद भी नहीं दिलाया, यहां पर प्लीज व्हाट्सएप कम्युनिटी तो ज्वाइन करिए. आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके एक थम्स अप दीजिए so that I know you have joined it across the WhatsApp, so that you keep following, keep learning. I keep sharing the updates here and आपने याद आज भी नहीं दिलाया, please do that so that हमारे followers है वो follow करते रहे. और यहाँ पर मैं फिर से चार्ट पे आ रहा हूँ. There is a question, what is the prediction basis of lunar cycle on Monday? lunar cycle Monday को कहाँ है? कल बात करेंगे ना डिटेल में. निखिल, ओके, आपने ज्वाइन कर लिया है, फैंटास्टिक. यहां पर ओके, एक और चीज दोस्तों बने रहना. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कमिंग वीकेंड, कल वाला नहीं, आफ्टर दैट द कमिंग वीकेंड विच इज गोइंग टू बी 6-7 of December is going to be Sutra of Waves. How many of you are a Trishul member here or the existing mentorship batch participants? Are you there? I'm just reminding all of you, please be there, करंट बैच वाले की आप लोग हो यहाँ पर. आने वाले वीक में 6-7 दिसंबर को सूत्र ऑफ वेव्स नियो वेव का सेशन है. वी आर गोइंग टू लुक एट फिबोनाची फोरकास्ट, वी आर गोइंग टू लुक एट द इचिमोको क्लाउड टू स्टेज कंफर्मेशन टेक्निक, नियो वेव, हाउ आई फोरकास्ट द मार्केट एवरीडे मॉर्निंग. ये सारी चीजें हैं. तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी. सो डू नॉट मिस आउट. लिंक शेयर करिए डायरेक्टर साहब सभी के साथ में. जो यहाँ पर नहीं है सूत्र ऑफ वेव्स में, त्रिशूल में, वो अगर जुड़ना चाहते तो अभी भी ऑप्शन है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, आप जुड़ सकते हैं. मैं बहुत ही क्विकली एक पोल भी ले रहा हूं यहाँ पर फॉर पीपल हु वांट टू बी देयर विथ मी फॉर 6-7 दिसंबर. एक पोल है विच पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड यहाँ पर लिंक शेयर किए आपने, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करिए फॉर पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर. Okay, there is a question here, sir. What is Sutra of Waves and what do we learn in that? Sutra of Waves is so मतलब बीज बोना जिसे हम कहते हैं ना,
दैट इज व्हाट आई कॉल ए सूत्र ऑफ वेव्स। और वहां पर क्या सीखते हैं, वी लर्न अबाउट मार्केट फोरकास्टिंग, भाव भगवान से, प्राइस एक्शन, कैसे फोरकास्ट करना है हमें मार्केट को सिंपल वे से। सो ये स्क्रीन अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मार्केट फोरकास्ट कैसे करना है। सो विल हैव लाइव सेशन ऑन 6-7 December. You learn about Elliott wave, you learn about Neo wave, two-stage methods, and it's about Fibonacci trading system. We will learn about post pattern implication, कैसे टारगेट्स कैसे निकालना है। ओके वो सारी चीजें हम देखेंगे सूत्र ऑफ वेव्स में। अगर आप त्रिशूल के मेंबर ऑलरेडी हो, यू गेट ऑप्शंस के वीडियोस, which is online videos that you get. You learn about all of option strategies combining with sutra wave. So wave theory का real power, if I have to ask you, अगर मुझे पता है फोर्थ वेव आने वाला है एंड द फोर्थ वेव इज गोइंग टू बी साइडवेज, टाइम इज 10 to 4, टाइम इज 10 to 4 एंड इसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, डोंट वरी ऑन दैट। इफ आई नो दैट द फोर्थ वेव इज गोइंग टू बी साइडवेज, can I not form a strategy on options by selling strangle or making some kind of a strategy? That's brilliant. If I know that there is up move going to happen on the upside and it has to happen in next week itself, basis of wave theory pattern, x wave complete हुआ, a आया, b बन रहा है, I know b ने अगर ज्यादा टाइम a से लिया, it's going to form a zigzag pattern. If it's a zigzag, c will be equal to a. अरे एक अलग ही वर्ल्ड है, एक अलग ही साइंस ओपन हो जाता है। So that is what Sutra of Waves is. Difference between Elliott wave and Neo wave, बहुत सारे जन के क्वेश्चंस आ रहे। The Elliott wave and Neo wave में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। Neo wave is an extension of Elliott wave. जो Neo wave है वो Elliott का एक्सटेंशन है। Okay, and if you check, there are 3 rules to define a pattern in Neo wave. In Elliott wave. Glenn Neely said, no, let's use more rules. ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम उसे। दैट इज द नियो वेव। संदीपन कह रहे सर गुड न्यूज, इंडियन इकोनॉमी ग्रू 8.2% लास्ट क्वार्टर, द बेस्ट सो फार। तो शुरुआत है संदीपन, न्यूज तो आएगी। भाव भगवान से प्राइस इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग इट, फ्यूचर देख रहा है। आई एम टेलिंग यू, we are entering into, or we have just entered into one of the best phases in stock market, is what I am making out looking at the charts. When was the last time you saw mid cap lifetime high, bank nifty touching lifetime high, nifty touching lifetime high? When was that last time you saw such synchronous behavior across? Such synchronous behavior across आपने कब देखा था? ये है synchronicity. I can be wrong, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, बट समथिंग मेजर इज हैपनिंग। एंड डिस्पाइट हाउ, व्हाट इज द टेरिफ राइट नाउ ऑन इंडिया एज ऑफ नाउ? आई नो ट्रेड डील आने वाला है, ट्रेड डील आने वाला है, लेकिन अभी कितना है? अगर आपको आज से 6 महीने पहले, अप्रैल के पहले किसी ने कहा होता 50% टेरिफ इज गोइंग टू बी देयर ऑन इंडिया एंड निफ्टी विल टच लाइफ टाइम हाई, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? If Nifty is going to touch lifetime high and there is a 50% tariff on India from the US, can you believe that is happening? विश्वास भी नहीं होगा आपको, विश्वास भी नहीं होगा। That is what shows relative resilience. स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है क्या आपके पास में? स्मॉल कैप में नुकसान हो रहा है आप लोगों को? स्मॉल कैप का थोड़ा सा एनालिसिस करने का टाइम है क्या हमारे पास? ओके, जीडीपी नंबर है 8.2%, आई ऑलरेडी मेंशन दैट। देखना है स्मॉल कैप, बहुत सारे जन का क्वेरी आ रहा है सर पोर्टफोलियो तो बढ़ ही नहीं रहा है, स्मॉल कैप में मिड कैप में यार इंडेक्स जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एक काम करते ना, स्मॉल कैप इंडेक्स को ही देख के एनालाइज करते, करे पोस्टमार्टम इफ यू आर अवेलेबल फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, मेरी टीम कह रही है सर कितना ही एक्सटेंड करोगे, चलेगा, सीखने दो, लोगों को सीख रहे हैं और मैं भी सीखता हूं सिखाते सिखाते। ओके, यहां पर चलिए स्मॉल कैप इंडेक्स पे, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आई एम ओपनिंग अप CNX स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ओपन कर रहा हूं। यहां पर वीकली चार्ट पे जा रहा है, घबराना नहीं, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे जा रहे हैं हम और सिंपल सा लॉजिक देख रहे हैं। लॉग स्किल पे मैंने ये अप्लाई किया। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। एलियट वेव सीखने के लिए रेडी है क्या? एलियट वेव सीखने के लिए सिंपल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जो जो एलियट वेव जानते हैं ऑलरेडी उनके लिए।
मतलब अभी मैं सिखा नहीं पाऊंगा। ये 0 पॉइंट है। कैन दिस बी पॉइंट वन? सिंपल एलियट वेव आई एम टॉकिंग अबाउट। कैन दिस बी पॉइंट वन? आर यू विथ मी? पॉइंट वन हो सकता है नहीं? आई एम कंप्लीटिंग वेव टू हियर. Wave 2 here, not here. I'm completing here. There is a reason of faster retracement is happening here. I'm completing it here. Wave 2. Can I say we are in the third wave right now? समझो थर्ड कंप्लीट हो गया. जस्ट इन केस थर्ड कंप्लीट हो गया. Can this be fourth wave? Can this be fourth wave? Within the fourth wave, after the fourth wave, can this be 1 and 2? Can this be 1 and 2? Can we say that? Let me draw a price action level. Simple, simple level बना है. कहाँ गया मेरा चैनल लाइन? यहां पर. डू यू थिंक वी नीड टू वरी? ये चार्ट देख के आपको लग रहा है? डू यू थिंक वी नीड टू वरी बेसिस ऑफ द वेव पैटर्न? सिंपल लाइन मैंने बनाया यहां पर, कुछ भी नहीं किया. कैन यू सी दिस? चैनल चैनल फिट नहीं हो रहा है लॉग स्केल पे. ट्रेंड लाइन फिट होगा. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सिंपल ट्रेंड लाइन. अ वेरी सिंपल ट्रेंड लाइन. आई एम showing the chart. Can you see the pattern? I'm asking all of you. Are you seeing the pattern here? This is small cap index. And I'm asking all of you, are you able to see the pattern here? This pattern is just going to give an amazing move. But patience will be rewarded. Okay? Patience will be rewarded. You have to be patient. हर रोज पोर्टफोलियो देखोगे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है. निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इज इन इट्स थर्ड वेव. It's in its third wave, second wave, man, in its second wave, and third is about to start. Do not worry if your portfolio is yet to perform. This is just going to test patience and flow. Are you with me? Every one of you. So this is just going to test patience. A simple pattern. Inverted head and shoulder है. यहाँ shoulder है, ये head है, और ये shoulder है. This is small cap 100. And once that happens, we are going to see an amazing move from here on. So जिनके भी portfolio में problem है, don't worry about it. I think it's just a temporary phase. You have to live with it. I'm going to go on a log arithmetic scale. हाँ, arithmetic scale पे channel बनेगा शायद से. Let me just check. Arithmetic scale पे नहीं बना. Exponential rise है. चैनल नहीं फिट हो पा रहा. ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है. अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूं यहां से, this can be the channel, and this is an inverted head and shoulder pattern. On the weekly time frame, on the daily time frame, it becomes very clear. Can you see that? Can you see that? Patience will be rewarded. इसलिए तो पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं हो रहा है. जुलाई पे यहां पर था, इंडेक्स अभी यहां पर है. थोड़ा पेशेंस. It's going to be there. It's going to be lovely, and that's why wave count. You know, wave count से इतनी क्लैरिटी आती है, पता चलता है कि मार्केट को कैसे देखना है. डायरेक्टर साहब लिंक शेयर किया गया सभी के साथ में त्रिशूल मेंबरशिप का. So questions please. But I just want to ask you before I wrap up. Was it interesting session on Friday at 4? Are you available tomorrow for the masterclass at 11 a.m.? Guys, are you available for the masterclass at 11 a.m.? I'm asking. And Sutra of Waves, do not forget to be there for the next weekend. It's going to be lovely. We are going to forecast the market. Poll मैंने on रखा है. आप poll में participate कर सकते हो. You can register yourself for Sutra of Waves also. Masterclass की link आपको चाहिए क्या वापस तो मुझे बताइए. My colleague will share across the masterclass link, and it's going to be lovely overall. चलिए यहाँ पर इतना ही दोस्तों आज के लिए. It has been wonderful to be talking to all of you. Fantastic, and guys, see you tomorrow on 29th Saturday at 11 a.m.
for a super masterclass using Elliott Wave. Link आपके साथ share हो गई है. Thank you very much for joining in, listening me out. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.